देन अब इसकी एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ है। In public key cryptography, every user has to generate a pair of key, among which one is kept secret and known as private key, and other is made public, hence called as a public key. Now, the decision of whether the sender's private key or receiver's public key will be used to encrypt the original message depend upon the totally on application. So we can classify the application of a public key crypto system as below. Encryption. Correct? If the purpose of encryption is to encrypt and decrypt the message, then sender has to encrypt the message using the intended receiver public key, and obviously बात है receiver can decrypt the message using his own private key. Then digital signature. If the purpose of the application is to authenticate the user, then message is signed or encrypt using sender's private key, and only the sender can have its private key, so it assure all the party that the message is sent by the particular person. तो कह रहा है यार आपको एग्जैक्टली प्राइवेट की या लगानी है या पब्लिक की लगा के एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना है, मतलब कौन सा मैकेनिज्म अचीव करना है, ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, कैसी है। अगर रिक्वायरमेंट है की एक्सचेंज, तो द टू कम्युनिकेशन पार्टी एक्सचेंज ए सीक्रेट की मे बी प्राइवेट फॉर अ सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन टू सिक्योर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। दिस सीक्रेट की इज वैलिड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। आप की भी एक्सचेंज कर सकते हैं।